We have one common interest, and that's our child, and he doesn't deserve. Hi, this is Arbaaz Khan, and please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel. जब अरबाज खान बैठे रहते हैं तो तनाव नहीं होती है, सिर्फ मोहब्बत होता है, प्यार होता है, पपिया होती है, झपिया होती है, और साथ में अरबाज खान की सबसे प्यारी बहन एकता भी बैठी हुई है। ये भाई बहन को देखकर एक साथ शो में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तूने तनाव बढ़ा दिया। बट रियली अरबाज भाई के बारे में एक अच्छी बात है, जब भी वो सेट्स पे आते हैं एक जगत भैया वाला परसेप्शन आता है कि भगैया आ गए सेट्स पर। तो आपको भी ऐसा लगा, आपने बोला यार कहीं एक भाई मुझे चाहिए था, वो अरबाज की तरह होगा, आपको फीलिंग आई वो? भाई मैं कितना अच्छा मजाक कर लेता है ये लड़का। अब आप बोल रहे हो बहुत क्यूट है तू। Not let me say. हाँ बोलो बोलो। सेट पे तो नहीं मिली थी मैं सर से, बट हाँ आज मुझे वो थोड़ी फीलिंग आई। मैंने कहीं आप इमोशनल हो रही है उनको देखकर कि आइडियल भैया ये होना चाहिए। I can't comment on that. एक बार कोशिश कर। I remember you met me outside. You said I want to tell Arbaaz. This is the way you promote Tanaav. This is what you've been sent for. तनाव नहीं भाई, this is to get people closer. मुझे याद है आप बाहर मिली, मैंने कहा I want to say Arbaaz भैया, but confidence नहीं आ रहा, बोल के दिखाओ। ये बोल देगी, ये तो बोल दे बाबा। अरबाज भैया। देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। देखा, she is a good actress. You saw this I performance? don't know what to say. कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। इतने फोकस से कोई भैया बोल सकता है? नहीं बट कंग्रेचुलेशंस ऑन फाइंडिंग अ ब्रदर। और मैंने ये भी सुना कि जब बहनें बनाते हैं गाड़ियां गिफ्ट करते हैं, घड़ियां गिफ्ट करते हैं, सब चीज। ये घड़ी भी आप उतार के दे दो बहन को। बट यू आर राइट, क्या होता है ना कि जो रियल लाइफ में जो हम लोग ऐसे रोल्स प्ले करते हैं ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जो भाई बहन के रोल्स हम लोग स्क्रीन प्ले करते हैं। पर ये स्क्रीन नहीं असल में हो चुका है। पर एक चीज है ब्रदर, इमेजिन जहां पे भी जाओ, अगर जगत भैया वाली फीलिंग आती है, ओनली अ फ्यू पीपल कैन डू इट, एंड इट शोज आपका बहुत प्योर हार्ट है भाई। है कि नहीं? कभी कोई शिकायत करता है तो बोलता है भाई आशीर्वाद ले लो मेरा, एंड ऑल दैट। And all that. What is included in all that? अच्छा ठीक है, टॉकिंग अबाउट तनाव, एक बहुत अच्छा डायलॉग है आपका ट्रेलर में, जो आप कहते हैं मैं पैदा हुआ था शहीद होने के लिए। दैट्स ऑब्वियसली फॉर द डायलॉग इन द ट्रेलर। You wanted to be serious in this interview. Did you sit here saying, is it a serious interview? And I said, try being serious in his interview. पर ये बहुत सीरियस सवाल है अरबाज। प्लीज आपके भाड़े की जैकेट की कसम, Can I please get एक some सेकंड, जो आपको डिजाइनर को क्रेडिट देना है। भाड़े की जैकेट की कसम। डिजाइनर को क्रेडिट भी देना पड़ता है फ्री जैकेट्स के लिए। तो मैं पैदा हुआ था शहीद होने के लिए। आप जेन्युइनली रियल लाइफ में किस चीज के लिए पैदा हुए? Thank you. भाई बता। याद है हम लोग ये इंटरव्यू से पहले जो तू डिस्कस कर रहा था? माने प्यार के बारे में। Yes. यू लाइक गिविंग अ लॉट ऑफ लव। Yes. Also receiving. रिसीविंग। किससे सबसे ज्यादा प्यार मिला है आपको? काफी लोगों से। जैसे कि जैसे कि बहुत सब टॉकिंग अबाउट लव, इसमें मैंने हंसी की याद है। जैसे कि किससे? देखो भाई, कोई ऐसी बातें होती है ना जो ऐसे डिस्कस नहीं की जाती। Really trying to laugh and is thinking about. बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं इतना प्यार है आप ओपनली नहीं बात करना चाहते। सही है, इस बात में सच्चाई है। क्या होता है कि जैसे कि आदमी जैसे कि कोई अच्छा कर्म करता है तो बात नहीं करता ना, वैसे ही जब बहुत ज्यादा प्यार करता है तो भी बात नहीं करता। इनफैक्ट अभी एक हाथ से, मतलब जो चीज आप करो दूसरे हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। लाइक बेसिकली if you're doing charity, you should just do and not let anybody प्यार know. कर दरिया में डाल। तो वही है, प्यार करते रहो और दरिया में डाल दो। और दूसरा चीज ये, जब हाथों की बात करते हैं, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय बोर्डिंग स्कूल डेज। मैं बॉयज स्कूल में था, सो वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट आवर हैंड्स एंड वैल्यू। that's because you develop your skills with your hands, right?
होमवर्क करके, स्पोर्ट्स करके, ब्रिक्स लिफ्ट करके, तो ये सब बहुत अच्छा है. इनफैक्ट यू वर वंस टैग्ड एज द मोस्ट रोमांटिक खान ब्रदर बाय कतरीना कैफ. उन्होंने कहा द मोस्ट रोमांटिक खान इज अरबाज खान. तो ये टाइटल के बारे में क्या कहना है आपका? I didn't know that she gave me such a title. Do you like that title? No, क्यों? no, I don't like that title because I'm not a very romantic person. You're not. No, माने it seems like maybe it gets projected that way. No, I'm very not so romantic. Yeah. Yeah, So you mean जब हम अपने as in the what's that, Mills and Boons kind of, you know, मतलब I make my care or concern be felt in very different ways rather than, you know, being very like bouquets and cards and, you know, all those things. Those मुझे are लगता है irrelevant to वो me. बहुत बड़ा आर्टिफिशियल भी लगता है मुझे कभी कभार. बहुत आप स्पॉन्टेनियस हो. Yeah. So what is the most romantic thing you've done for Georgia? Many. She'll talk about it. Why should I talk about it? कुछ तो किया होगा ना. मुझे गोल्स चाहिए भाई. मैं खुद करूं. ये नोट्स लूंगा मैं भाई. चाहिए तो आपको फुटबॉल खेलना पड़ेगा. फुटबॉल की बात कर रहा हूं, आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं. हाँ. But और साथ में आपको जो बॉल भी चाहिए ना वो भी मिल जाएगा. अच्छा, बॉल के साथ Guys, प्यार I'm not करो. here. फुटबॉल के साथ बेसिकली प्यार करो. जो भी करो प्यार करो. और प्यार किया तो फिर डरना क्या. क्या बात है. right. क्या हिट फिल्म थी आपकी. हाँ. जेन्युइनली. You also need to be hit right now. अरे नहीं यार. Yeah, भाई. actually, I'm serious. अरे क्या यार. I'm serious. Yeah, like how? Yeah, you need to get a hit right now. Like, you know, like a hit show. ये अरे ये सर ट्रेंड मारता है. अच्छा ट्रेंड मारता है. जेन्युइनली यार. तो बच्चा होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन द चाइल्ड. ताली बजाइए. इतना क्यूट बेबी है इनका. हाँ, पहला बच्चा पैदा हुआ वर्ल्ड के अंदर. ताली मार. नहीं अच्छी बात है यार. हाँ, तो उसके बाद पति के साथ ज्यादा तनाव हो गया है कि कम हुआ है. टाइम ही नहीं मिलता ना एक्चुअली. जैसे कॉन्स्टेंटली बिजी इन वर्किंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द बेबी. चिल्ड आउट है दोनों टर्म. पर्सनल लाइफ. आफ्टर बेबी एवरीथिंग इज बेटर देन बिफोर. बिटवीन द थ्री ब्रदर्स जब तनाव होता है, कौन तनाव को सॉल्व करता है तीनों भाइयों में? अरबाज अगर है, सोहेल है. None of us are capable of doing that. amongst each other, yeah. I think we all have our own way. सब अपने तरीके हैं solve करने के लिए. And I think we've done a good job until now. I guess we all know how to handle our problems, issues, and all that stuff. Yeah, and that's a part of life. I have never crossed the line with Salman. बहुत साल पहले आपने कहा था. अब क्या over a period of time, वक्त के साथ साथ maybe in ऐसा नहीं है. There's no need to cross the line with anyone. Not just because he's my brother and, you know, he's Salman. Why would you cross the line with anyone, right? So what I meant was that I have not taken the liberty of the fact that he's my brother, and, you know, even though he's a big star, I've like not acknowledged the fact that, you know, he's a big achiever in life, and he would like that, you know, हमको लगता है कि बाहर वाले हमको appreciate करें ना, वो ज़्यादा important है. हमको सबसे ज़्यादा important है कि हमारे लोग हमको appreciate करें. How sweet, yes. When your parents look up to you, when your brother looks up to you, and वो problem ये होता है कि दुनिया आपको अच्छी नज़रों से देखती है और आपके घर वाले आपको नहीं देखते ऐसे, right? सबसे बड़ा issue लोगों का होता है, everybody thinks that I'm good. You're the only one who has a problem with me. You're the only one who doesn't think that I'm a big star. You're the only one who doesn't acknowledge me. So the point is that I acknowledge the fact that my father, my brother, they're achievers in life, and they need to be given that due respect. And that liberty cannot be taken away from them, or should not be taken. कि भाई ठीक है यार, तू भाई है तो क्या स्टार हो गया तो क्या? No. Taken for granted नहीं होना When I discuss as a brother, that's a different thing. But you cannot dismiss the fact that he's a big achiever, and that's an inspiration, and that's something that you should be proud of. I'm proud of the fact that both my father, my brother, and my other brothers are all achievers. नहीं, बट पते की बात की. ऑनेस्टली, आई मीन ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, हम लोग अपने ही लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं. हम लोग को लगता है कि दुनिया तारीफ करे तो वो इंपॉर्टेंट है. दुनिया खफा है तो अरे क्यों खफा है. अपने लोगों के साथ आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट एज वेल. हाल ही में किसी ने एक मैसेज डाला, हाउ सक्सेसफुल इज इट इन योर व्यू टू मैरी अ डिवोर्स्ड मैन और वुमन? एंड यू रिप्लाइड, एंड आई लव्ड योर रिप्लाई, सेइंग इट्स अ डिस्गस्टिंग क्वेश्चन बट स्टिल लव टू आंसर. इट इज सक्सेसफुल सर. आपके लिए how important is it to reply to a troll, and first of all appreciate you doing that? Thank you. I generally don't reply to each and every troll that I get. I just keep it very
स्पेसिफिक जैसे कि आपने अभी ये पॉइंट आउट किया, ये किया, या अभी मैंने तनाव की एक पिक्चर डाली थी जिसपे किसी ने ट्रोल करके ऐसे लिखा था दैट व्हाई ओनली men are standing in front and women are behind. What kind of setting is this कि आगे आदमी है और पीछे औरत है. तो मैं बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें जो कि आजकल एक्चुअली एवरीबडी इज बिकम वेरी सेंसिटिव. आपने नोटिस किया, आप छींक भी मार दो ना तो अगर किसी को बुरा लग जाए तो लिख देगा अरे भाई इसने छींक मार दी. तो आई जस्ट पिक अप ट्रोल्स जो कि अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज उठाते हैं ना, देन आई टू रिप्लाई टू हिम कि सर इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जेंडर, इट्स बिकॉज ऑफ हायरार्की. जी, ये हमारे सेट में इट्स बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी गिव टू एवरीबडी. तो आप प्लीज उसको जेंडर बेस्ड मत करो कि ये औरत पीछे है और आदमी है. डोंट मेक इट लुक लाइक दैट, इट्स नॉट दैट. तो आई थिंक समटाइम्स व्हेन यू हैव टू पुट योर पॉइंट, when you have to make a certain statement, then it's all right to answer them, but otherwise if it's stupid and not relevant, then I avoid it. But I loved it that you gave it back to this one, Dil Se. I really admire that as well. Thank you. Arbaaz, Malaika ने हाल ही में कहीं कहा था कि my relationship with Arbaaz has become much better after divorce. And we see your videos and both of you go and drop your son to the airport. They're beautiful moments. Do you also feel the same way, bhai? I always, I was okay, obviously, with the whole. Yeah, I guess we have a child together, you know. So we have to be in a very, very nice state of mind, and that's how we've always been. And yes, we've both grown to be different people and matured over the time and years, and have been a little more acceptable about each other's lot of things. Right? You've got to move on in life. You've got to accept things in life. And there are a lot of things about me that she may have accepted, and there are a lot of things about her that I may have accepted. But we have one common interest, and that's our child. And he doesn't deserve to have any kind of scenario where there's a discordant note which continues to happen while he's growing up, right? So she's been very mature about a lot of things, and fortunately I have been as well. And I guess she's right when she says that. She's absolutely right that we have grown to really appreciate each other's choices, let's put it that way, and life decisions. Yeah. How nice. And in fact, when I see those videos, I think it's so beautiful. Kabhi kabhar jab aata hai na, they go to the airport to drop the son, and I find that beautiful. Also, I feel divorce or hatred to क्यों relate करते हैं? Why do you have to hate the other person if you're getting divorced? जी. You can be friends with them. Yeah. And just sometimes move on people end up being, happily. sometimes people end up being better, can generally make relationships better, because when you're in a relationship, by default there are too many expectations and demands and, you know, dictates, you know. It just comes on with the territory. That's why when you're in a relationship, it's like how can you be a part of a movie and not concentrate on your role? You're doing the movie, you got to concentrate on your role. So if you don't have a movie, then you're chilling at home, right? But it doesn't work. So similarly, when you're in a relationship, there are pressures. It's like you cannot just turn up any time of the night. You cannot have any person that you meet or do whatever you want. You are responsible for your existence and whatever you do with the other person. And sometimes things can work till a certain point, and then sometimes people grow to be different people, and you have to and change is not a problem. We look at change, you have changed, you were not like that. Yeah, probably that was probably wrong, for that matter. The things that I was accepting and I was doing then was not so was I didn't know who I was. I'm beginning to understand who I am, and I've got a more control over my emotions and more control over my understanding of what I want in my life. And I think right now this doesn't work for me, or this is not happening. And the point is that the only thing that one would worry in a relationship is not about how happy somebody else makes them, you know. It's like you put too much of pressure on the other person making you happy. I stress the other way around. I feel that it's like if somebody is not happy with you, which can happen, and happens more often than not. You know, relationships that work not really very necessarily happy relationships. We are under a misconception that, you know, if this relationship is 20 years old or 30 years old, 40 years old, it's a very successful, very good relationship. Not necessarily. It could be a very miserable, toxic relationship that has been going on for all the wrong reasons, right? The fact that you move out of a relationship, you're actually doing a better service to that person, because And that's each other than to stay in that relationship. So
that choice is a difficult choice at times because by force of habit we do things which we know are wrong, but we are habituated to it. Like smoking, for that matter. We all know it's wrong, right? It's there on the cigarette pack that smoking kills. And 50,000, but you tend to not even look at it, right? Till when you go and you get a problem and you go and your doctor says there's a patch in your lung, and that's when you realize that shit, it was because of smoking. That happens with relationships. We tend to ignore the things that we know are bothering us because we just want to overlook it, and then we have to one day confront it and face it, and that this is the problem. It's like an elephant in the room. We were just like dodging it and bypassing it, right? Yeah. And then it's sometimes too late. But like they say, never too late. You have to take certain decisions in life, and you have to take them. They are all for the betterment. And actually, when they say ना कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है ना, अगर आप सचमुच आप टाइम दो ना वो चीज़ को समझने के लिए ना, वो genuinely कहीं ना कहीं जाके वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है आपको. There are no setbacks, my father says. There are only lessons. There's nothing like a setback. There's only that experience is only going to enrich you, no matter what it was. If you can learn from it, it's only going to give you something. It's not taking away actually anything from you. Wow. मैं एक चीज़ बोलूँ, so rightly said, and you brought that up कि if people move in different directions, you still can have a great, happy life and be happy for each other. Yeah. In fact, it takes a lot of courage to do that also, it does, and it's the most sensible thing to do.